बाकी वो बुद्धा वो मेहदी वाला एक ही है. Jesus is separate. All three names are of names of one man. So this is then the concept, because we have now on the planet we have two people who are claiming to be the Maitreya, who are saying that they are God returned. How do we then deal with the fact that we have two people making this claim? Is there some way we can determine who is true and who is false? कह रहा है कि इस तरह कह रहा है कि फिर दो आदमी हुए जो वापस आएंगे और दो मिलके सारा इनकलाब लाएंगे. कह रहा है हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई ये वही ट्रू बंदे हैं? हम कैसे पहचानेंगे और कैसे पता चलेगा कि ये सही है या वो गलत है? चोर को चोर पहचानता है ना, नूर को नूर पहचानेगा ना. He's saying the one who steals, he recognize another, thief. The thief recognize thief immediately. Just like that, if you have a light of God in your heart, you will recognize immediately. एक चोर उधर बैठा दो, एक चोर उधर बैठा दो, उनकी आंखें टकराएंगी. If one thief is sitting in another corner, another thief is sitting in another corner, if their eyes coincide, एक मोमन उधर होगा, एक मोमन इधर होगा, इनके दिल टकराएंगे ना. if the one man of God sitting on the other corner, on the other corner, they both have light of God in their heart, they will recognize. मोमन उसको बोलता है जिन लोगों में नूर होंगे तो नूर नूर को पहचानेगा ना. Moment is the stage of a person, the one who has a light of God in their heart. That's called moment. Now, I would not presume to say that I am a saint. Therefore, how can I tell? वो कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वली हूँ या मैं वो हूँ, तो मैं कैसे मतलब नूर पैदा करेंगे. That's why he's saying create that light of God in your heart, then you will be able to recognize. जब तेरे अंदर नूर होगा ना, अल्लाह अल्लाह हो रहा होगा ना, अब उसके भी अंदर अल्लाह अल्लाह हो रहा होगा तो सामने जाएगा तो अल्लाह अल्लाह टकराएगा, समझ जाएंगे इधर भी अल्लाह अल्लाह है. Once the name of Allah is happening in your heart, is reciting name of Allah through your heart throat, another man in his heart also Allah Allah is going on. Once you come in front of him, then it will strike each other and it will get fast and you will come to know the man you are met now, he is a man of God. Is this the only way that I can determine? कहता है क्या ये एक ही रास्ता है पहचानने का? बस एक ही रास्ता है, वरना कुछ भी नहीं. There is only one way, there is no other way you can recognize. वरना ना दाढ़ी से पहचान सकता है, दाढ़ियाँ भी लोगों को इतनी इतनी हैं और तस्वीरें बड़ी बड़ी हैं, जुब्बे भी बड़े बड़े. Otherwise you can't recognize it beard, you can't recognize with the clothes, you can't recognize with the outside clothes, jubba and so many things. So you can't recognize with those things. I think what worries me is how would I know that I am not a thief recognizing another thief? कहता है कि मैं इससे परेशान हूँ, मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं कैसे चोर को पहचानूँ? तो चोर बने ना फिर इसके लिए. When you become a thief, then you'll be able to But I mean, it is a serious question, because if you say to a thief, "Are you a good man?" he will say, "Yes, I'm a good man." क्या बोलता है? कहता है इसका मतलब ये बड़ा अच्छा सवाल है बस ये चोर को पहचाना, चोर बन जाओ बस. Yeah, thief can recognize a thief, so become a thief. यही वजह ना जिनके लोगों में जरा सी भी लाइट थी उन्होंने नबियों को पहचाना ना. That's the main reason that those people who are having a very slight amount of a light of God in their heart, they recognize the prophets. उन्होंने जाने भी दी ना नबियों And के लिए. they gave their lives for them. पहचाना तो जाने दी ना. Because they recognize the prophets, that's why they give their lives for them. तो जिनमें ये कुछ भी नहीं था वो तो पहचान नहीं सके ना, उन्होंने मुखालफतें करी ना. And those who were not having a light of God in their heart, they were against them. They didn't cooperate. इसी तरह जिनके दिलों में जरा सा भी नूर होगा वो मेहदी को पहचान के साथ देंगे ना. तो जिनके दिलों में कुछ भी नहीं होगा फिर शैतान होगा, शैतान उसके मुखालिफ होगा. And those who do not have a light of God, they will be against Mehdi at this time, and they will not cooperate with him, and the Satan will be with them. लेकिन वो लोग जिन रूह ने ऊपर अल्लाह से मोहब्बत करेगी वो भले सिख है, भले हिंदू है, भले मुस्लिम है, वो मेहदी का साथ देगी. And those souls who fell in love with God that time, whether they are Muslim, they are Christian, they are Sikh, whatever their religion, they are going to join Mehdi and they are going to cooperate with Mehdi and join him. इस वजह से उसको सब तस्लीम करेंगे. That's why everybody and every religion will accept Mehdi. उस वक्त मजहब नहीं था, मजहब तो यहाँ हुआ है ना, उस वक्त मोहब्बत ही थी ना. At that time there was no religion, there was only love of God. वो जो रूह है ना वो मेहदी का साथ देंगे. And those souls are going to join Mehdi and help him out.
वो तो कुदरती तौर पे देगी, लकी तौर पे देगी, उनकी मुकद्दर में जो लिखा गया। तो बाकी रूहें जिनके अंदर अल्लाह अल्लाह का नूर होगा उसके जरिए पहचानेंगे। And those souls by luck and by chance, because they are amongst them, those who fell in love, that's why they will be Mehdi, with Mehdi and join Mehdi at Islam. But the other souls, if they have a light of God in their heart, only then they can join Mehdi, otherwise they can't. I suppose what concerns me is if we go back to the time of Adam. At the time of Adam, there was only one religion. It was the true religion. Since the time of Adam, many religions have come, as was mentioned. You mentioned 72 different versions of Islam. Yeah. There are over 500 different versions of Christianity. And then when we go into Buddhism, into Hinduism, we come to thousands upon thousands Yeah. of different ways. In the eyes of God, there is either the right way or the wrong way. So for myself, I don't have to choose between thousands of different religions. I have to either choose the right religion or the wrong religion. Yeah. But can it be that the members of all the thousands of wrong religions can also find a path to God through that religion? अगर पूछा है सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद को एक ही रिलीजन था जो सच्चा रिलीजन था, कोई एक ही मजहब था और कोई मजहब नहीं थे। फिर मजहब तब्दील होते रहे। कह रहे हैं इस वक्त हजारों की तादाद से मजहब हैं, मुख्तलिफ मजहबों के अंदर एक एक मजहब के कई हिस्से हैं। कह रहे हैं उन मजाहिब में जो लोग हैं, अगर वो भी अल्लाह को पाना चाहें तो क्या वो अपने मजाहिब के थ्रू प्रोसेस करके अल्लाह को पा सकते हैं? मज़हब के जरिए तू पहले किताब है, तू भी नहीं पा सकता। He's saying even if you have a book of God and through your religion, even you with the book you can't find a God. You can't approach the God. अल्लाह को इस दिल के जरिए पाता है, कोई भी हो। And whatever religion, whatever sect is yours, you can find and approach the essence of God through your heart only. So really I have to give up whatever the religion is, whatever the sect is, whatever the teachings are. Yeah. All of those have to be put aside. पूछ रहा है कि जितना मेरा मजहब है, मेरा अकीदा है, मेरी किताबें, सब उसको मैं के साइड में रख दूं, इस तरफ आ जाऊं। जब इस तरफ आ जाएगा ना तो वो साइड में रह जाएंगी खुद ब खुद। He's saying if you come towards heart, towards the love of God, then it will automatically be on the side. Now I'm going to touch on maybe a more dangerous question. Because then if I say, okay, I take the Torah, I put the Torah aside. Yeah. I don't need the Torah. I take the Injil, and I say I don't need the Injil. And then I take the Quran, and say now I don't need the Quran. So now I'm left with nothing. Can I trust myself to only go by my feelings? कह रहा है कि अगर मैं तौरात उठा के साइड में रख दूं, ज़बूर उठा के, इंजील उठा के साइड में, कुरान साइड में, तो क्या मैं अपने ऊपर अपनी जो एहसासात हैं, महसूसात हैं, उस पर भरोसा करके चल पड़ूं? मेरा मतलब है कुरान का भी यही मतलब, अंजील का भी यही मतलब, अल्लाह से मोहब्बत कर। The aim and objective of Torah or Injil or Quran is only to fall in love of God. सबका यही मतलब अपने शैतान को पाक कर। All the books, objective of every book that you get clean within yourself. Shall I say it again? You should get clean from inside, inner purification, achieve inner purification. बहुत से लोग हैं जो ना कुरान जानते थे। हमारा एक वली है सखी सुल्तान बहू, ना कुरान जानता था, नमाज ना किसी मदरसे में पढ़ा, लेकिन उसने अल्लाह अल्लाह से अपना को मुनव्वर कर लिया, फिर अल्लाह की तजल्ली पड़ी, अल्लाह का वली हो गया, फिर बाद में उसने वो सीखा ना। There was one of a great saint. He wasn't knowing Quran. He never offered prayer. He wasn't involved in any worship. He learned only Allah, Allah. And through that Allah, Allah, he approached the essence of God, and the light of God penetrated inside body. And once he became a very great saint, then he learned those things. जब दूसरी चीजें सीखी ना तो फिर बहुत बड़ा वली बन गया ना। And once he learned all those things, all the books and Quran, then he became a very famous saint. अगर ये ना होता तो फिर वो तो सेंट सारे मौलवी जानते हैं ना कुरान नमाज। If you don't have your heart reciting Allah, Allah, then the books, so many people know that books, and so many people have that knowledge. Then the question I suppose would be, what then is the purpose of the books? Because without the book, I would not have known of Allah to recite the word. कह रहा है फिर किताब का क्या मकसद है? क्योंकि किताब के बगैर तो हम अल्लाह से वाकिफ नहीं थे, ना वाकिफ हो सकते थे। वो एक इल्म है, ये एक अमल है। That is a knowledge. The book is a knowledge.
and that is one involvement in doing, this getting your That is theoretical, this is practical. that's theory, that's practical.